All right. So let's continue from where we had left. हम लेबर मार्केट कर रहे थे और उसमें हमने वेजेस वाला पोर्शन, वेज डिटर्मिनेशन वाला पोर्शन कर लिया था. And today we will finish off with the price determination part and what happens when the exogenous variables move. Any questions from what? Okay. Any questions from what we have done so far? No? Aditya? आदित्य स्क्रीन ऑन करके भाग चुका है. ओके, सॉरी. ओके, अच्छा चलो, आई टॉक टू यू लेटर. All right, so we basically considered that how wages are determined, right? और उसमें हमने basically we talked about the fact that even though there are various ways in which wages are determined, wages are by the interaction of the employers as well as the employees, prospective employees, दोनों के determination, दोनों के bargaining से और existing labor market conditions के basis पे बहुत सारे तरीकों से लेबर डिटरमिन होता है, वेज डिटरमिन होता है. You can either have a take it or leave it sort of thing, right? You can have like one-on-one bargaining, और इन दोनों के बीच में you can also have a collective bargaining वाला scene. But इन सब को लेकर अगर एक यूनिफाइड थ्योरी बनानी है about wage determination, then you just need to focus on two things, which is sort of the regularities that is observed. पहली चीज ये regularity observe की जाती है कि market conditions के विपरीत, right? So if the market conditions are good, the wage or the bargaining power with the employees go up, employees go down, market power of the employers go up, right? So उस केस में वेज जब मार्केट कंडीशन अच्छी है तो वेज ऊपर जाती है. डिड से उल्टा? Let me rephrase. So when the market conditions are or labor market conditions are bad in the sense कि unemployment ज्यादा है, तो उस केस में एम्प्लॉयर का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है. ये नहीं तो कोई और सही, और इसके पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, राइट? एम्प्लॉइज के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं लेबरर्स के पास, और दैट मीन्स दैट द वेजेस दैट विल बी सेट विल बी लो, राइट? एंड इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो, है ना, मतलब मार्केट कंडीशन अच्छी है, तो जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास ऑप्शन ज्यादा है, उनके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, एंड देन employers have a lower bargaining power, right? So if the unemployment rate is low, then the wage that is usually determined by this interaction is higher. And then we said that of course wages also depend on other things like the efficiency wages, and efficiency wages themselves are determined on the market condition. So in dono hi ke like the bargaining power as well as efficiency wages, or how much the wages will exceed the reservation wage, ये दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं मार्केट कंडीशन पे, ठीक? और मार्केट कंडीशन मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, दैट इज हाउ वी आर स्पेसिफाइंग द लेबर मार्केट कंडीशन. So what we observed was that higher the unemployment rate, lower the wage that will be set by this interaction. And then we had this catch-all variable, which was basically saying कि अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा जो भी चीजें डिटरमिन करती हैं वेज रेट को at a given level of unemployment. So if you observe, we discussed factors like these. So if you observe that there is an increase in unemployment insurance, तो इसका मतलब कि wages will go up at any given level of unemployment. Same level of unemployment पे you will see that the wages in the economy have gone up because the workers' reservation wages have increased, right? Similarly, अगर एम्प्लॉय प्रोटेक्शन बढ़ता है तो भी वेजेस ऊपर जाएंगे. अगर मिनिमम वेज रूल increases the minimum wage, again wages in the economy go up. And then we had this expected price variable. First of all, price variable इसलिए है because people care about the real wages and not the nominal wages.
both sides, and the expected price level, because often the wage contracts have some lock-in period, चाहे 1 साल का हो चाहे 3 साल का हो, कुछ ना कुछ हर दिन wages नहीं बदलते हैं, है ना? So you have to set your wages based on some expectation about future price. So this is what we had. The most important part about this, what you should understand is that ये ना एक वेज डिमांड की इक्वेशन है, ना ही ये वेज विलिंगनेस टू पे की इक्वेशन, right? This is the equation about the interaction in the labor market, and it incorporates behavior of both sides, and therefore because behavior of both sides, the bargaining power as well as the willingness to pay efficiency wages, and the willingness or the ability to demand efficiency wages, ये दोनों पार्टीज की बात कर रहे हैं, है ना? इसीलिए ये दोनों चीजें जो है एक चीज पे डिपेंड करती हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, विच इज द लेबर मार्केट कंडीशन, एंड देयरफॉर वी आर रिलेटिंग कि इकोनॉमी में वेज रेट क्या चलेगा वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे डिटरमिन करेगा. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये कितना एम्प्लॉयर्स देना चाहते हैं, वी आर नॉट सेइंग कि ये कितना एम्प्लॉयज डिमांड करते हैं, right? So this is what will be set, right? जब बेसिकली लेबर मार्केट क्लियर होगी, इन द सेंस के एक लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बेसिस पे ये वेज सेट हो. Cool, we'll talk about this more, about the equilibrium and everything. Okay, so once this is clear, now let us move to the price determination. अभी फिर से इसका नाम जो है ना वो थोड़ा सा मतलब can be misleading, right? So again, we have to be very clear that price determination कहना क्या चाह रहा है. The way it is explained is that, so now we are going to talk about price determination. So what we notice is that firms set prices based on some production function, है ना? तो वो लिखते हैं. So firms किन basis पे prices set करते हैं? There are two considerations. Production function, right, which is basically giving you the constraint, and the input costs, है ना? So एक given level of inputs पे कितना produce किया जा सकता है, right? That will tell you के इस cost पे हम किस level पे profit maximize कर सकते हैं. That is your production function. And then for any given level of production that you want to do, input costs will decide के फिर से price कितना set होगा, है ना? So both these like factors enter into when firms are setting their prices. Now अभी तो हम individual firm level पे बात कर रहे हैं, but we will soon move to an understanding at the economy level wide. So right now we are in the like medium run, so we are assuming that only labor is the variable input. In the medium run, right? So we will specify the production function as this. Y is equal to AN, ठीक है? ये N है employment. Y of course is the output, right? तो अभी हम फिर से पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि हाँ फर्म्स का कुछ बेसिस रहता है प्राइस सेट करने का, बट अगेन गोइंग फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो, पूरे इकोनॉमी में एक कोई प्रोडक्शन फंक्शन है, ये इकोनॉमी इतनी एफिशिएंट है, इसके ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और दिस इज द प्रोडक्शन सेट ऑफ एनी पर्टिकुलर गुड, whichever way you want to look at it. और ये सारे इनपुट्स हैं, इन इनपुट्स का ये कॉस्ट है, ये गोइंग वेज रेट है. अभी के लिए the only input that we are concerned with is the labor input, तो ये वेज रेट है, ठीक? This is then what labor productivity, है ना? जिस तरीके से ये formulated है, this basically means that this is a CRS production function. It's a simplifying assumption. So this essentially implies that we have a CRS
प्रोडक्शन फंक्शन। CRS क्या होता था? व्हाट इज CRS? Constant returns to scale, which means what? Constant return to scale का क्या मतलब है? राइट, ठीक है। आदित्य, याद है ना? CRS प्रोडक्शन फंक्शन मतलब if you increase input by any factor, output also increases by the same factor। ठीक है, तो ये जब लिखना, तो the terms that you should use is have to be very precise। ठीक है, ये it shows that you understand, but you have to use precise terms। If you increase inputs by a certain factor, output also increases by the same factor। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनपुट प्लस टू आउटपुट प्लस टू। इट मीन्स दैट यू डबल द इनपुट्स एंड द आउटपुट डबल्स, राइट? This does not mean that you increase the input by 1 unit, your output increases by 1 unit। That's a different function। ये in terms of factor है, तो multiplication के terms में सोचना है इसमें। ठीक है, so CRS production function है and your dy by dn, which is the marginal productivity of labor, right? This is equal to A, which is equal to a constant, है ना? इसीलिए whenever you change m by any amount, output changes by a fixed amount, which is A। ठीक है, so अभी हमें इसमें further simplification करेंगे। So this is constant। Now we will do a further simplification in which we will say that, since A is constant, assume that A is equal to 1 for simplicity। Right? So you increase employment by 1 unit, your output increases by 1 unit। ऐसा हम simplification कर रहे हैं। The reason is that we don't want to carry A around everywhere। All right? If we just put it equal to 1, तुम चाहे जहां भी A लगाना है लगा सकते हो, वो एक कांस्टेंट है, तुम उसको जहां भी अटैच करना है कर सकते हो। या फिर तुम ये कह सकते हो कि A equal to some C है, which is again saying the same thing, or you can say that A is equal to just 1। Right? So we're just making some assumption about it being equal to 1। Nothing will change if you change the value of 1। So it just makes, writing or the equations simpler to work with। So then what we will have is implies 1 worker, 1 unit of output। So every worker produces 1 unit of output। And therefore, what you will have is that the production function is y is equal to n, and at wage rate W, what is the cost of producing 1 unit of output? If your wage rate is W, how much will it cost to produce 1 extra unit of output? W by P नहीं, we are not talking about the real price। As a firm तुमको
ये सोचना है कि इफ आई वांट टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, दिस इज हाउ मच आई विल हैव टू पे, राइट? सो जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल राइट नाउ। सो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक वर्कर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, सो देन if you want to produce another unit of output, you have to hire another worker or hire the same worker for an additional unit of time, जिस भी तरीके से सोचना है। So this is equal to W। ठीक है, प्राइस अभी हम इस इक्वेशन में लाए नहीं है, लाएंगे। So for producing an extra unit of output, the cost will be W, and the cost of producing an extra unit of output by definition is what? The marginal cost of production, right? MC, marginal cost. And by definition, what is the marginal cost in this setting? Simply W. Cool. Now, if the entire economy was perfectly competitive, है ना, हम economy wide सोच रहे हैं, तो जब entire economy अगर तो perfectly competitive होती, जो हमारे classicals का assumption था, तो how much would the price be set? If economy was perfectly competitive, right? Or at least the goods market, right? So या तो इकोनॉमी या एटलीस्ट गुड्स मार्केट परफेक्टली कंपेटिटिव होती, है ना? सो हाउ मच वुड हैव बीन द प्राइस in a perfectly competitive market? The price is set equal to the P is equal to परफेक्ट कंपटीशन में अभी माइक्रो का टेस्ट दिया ना, MC। मोनोपोली वगैरह में या बाकी किसी मार्केट में क्या था, जब तुम यू विल प्रोड्यूस वेयर MR इज इक्वल टू MC, in this case you will produce where P is equal to MC because P is equal to MR। याद आ रहा है? तो P is equal to MC होता, which in this case, हे भगवान, would have been just W। अगर मार्केट्स परफेक्टली कंपेटिटिव होते, तो हमें को ऐसा देखने को मिलता कि अगर वेज रेट, कोई भी वेज रेट चल रही है ना, since labor is the only variable input and suppose CRS है, तो हम ये सब, मतलब कि हम ये सब simplifying assumption ले रहे हैं, but we will see that even with this simplifying assumption we will get to a real world, like we will be able to model a real world complication। ठीक है, so हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई एटलीस्ट लेबर मार्केट में दी फर्म्स आर कंपेटिटिव, है ना, तभी उन्होंने डब्ल्यू जो है वो एज गिवन लिया हुआ है, दे आर प्राइस टेकर्स इन द लेबर मार्केट, तो वहां पे जो वेज रेट चल रहा है वही उनका गिवन है, और गिवन के सीआरएस प्रोडक्शन फंक्शन है, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, राइट, इज बेसिकली जस्ट द वेज रेट। अब अगर गुड्स मार्केट भी परफेक्टली कंपेरेटिव होता, तो हमको क्या मिलता कि प्राइस भी इक्वल टू डब्ल्यू हो जाता, बिकॉज पी इज इक्वल टू एमसी इज इक्वल टू डब्ल्यू। लेकिन व्हाट दिस मॉडल अलाउज इज दिस imperfect competition scenario in the goods market। ठीक है, सो अच्छा ठीक है, let me come back to that, right? So what we have is that, but
there is imperfect competition in the goods market. Which implies that firms have some market power. Which implies that they can charge a markup. Above MC. Okay. Now think about it that this statement does not rule out the existence of perfectly competitive market in any goods market. हो सकता है कि कुछ goods ऐसे हों, right, जिनमें the market scenario is very close to a perfectly competitive market, है ना, जैसे कि कुछ ऐसे हो गए जैसे कि मान लो कि लोकल मंडीज में जो है सब्जी मार्केट में it's close to a perfectly competitive model, right? Or you have different markets that are on this spectrum, है ना, so कुछ suppose monopolistic competition वाले जोन में है जहाँ पे उनका कंपटीशन काफी है, कुछ बिल्कुल ही मोनोपोली वाले जोन में है, कुछ ओलिगोपोली में है, कुछ वेरी मच क्लोजर टू परफेक्ट कंपटीशन. बट इफ इवन वन मार्केट हैज इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि गुड्स मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं है ना. तो दैट इज ऑल दैट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग. सो दिस स्टेटमेंट इज सेइंग दैट गुड्स मार्केट में ये अज्यूम कर लेना, राइट, कि हर जगह परफेक्ट कंपटीशन है, ये बहुत ही फ्लॉड अजम्पशन. हो सकता है कुछ मार्केट्स में हो, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट, द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, द काइंड ऑफ डिमांड. हो सकता है कि कुछ मार्केट में द सिचुएशन, द रियलिटी इज वेरी क्लोज टू अ परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट, बट ओवरऑल इकोनॉमी में ये नहीं होता है, राइट. सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व इन द एग्रीगेट इज दैट अगर गुड्स को प्रोड्यूस करने का कुछ मार्जिनल कॉस्ट है, राइट, विच इज ओनली अ रिजल्ट ऑफ द वेज रेट, राइट. सो गुड्स को प्रोड्यूस करने का अगर कुछ कॉस्ट है विच इज द गोइंग वेज रेट, we will usually observe that firms set a price which is higher than their cost, and this is because they have market power. ये कह रहे हैं, ये इस चीज को रोल आउट नहीं कर रहे हैं कि गुड्स मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हर गुड के मार्केट में नहीं होगा, ओवरऑल नहीं होगा, right. So it allows for the degree of competition to vary from perfect competition till monopoly. Cool. Also हम जो इसमें कह रहे हैं कि फर्म जो है वो इस पर्टिकुलर अभी सेक्शन के लिए हमने क्या बोला कि फर्म्स लेबर मार्केट में प्राइस टेकर है, बट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दैट इज आल्सो नॉट ट्रू, राइट. वी आर नॉट इवन मेकिंग दैट सिंपलिस्टिक अजम्पशन. हमने पहले ही कहा है कि फर्म्स और एम्प्लॉयज बार्गेन करके वेज डिसीजन पे, वेजेस पे अराइव करते हैं. Again, you will have situation in which the worker is so powerful because of the high skill level of the job, the high skill requirement of the job, and because of very good market conditions. हो सकता है कि उसके पास इतनी bargaining power हो कि एम्प्लॉय को उसका वेज टेक इट और लीव इट टाइप का बिहेव करना पड़े फर्म को, राइट. सो फर्म हैज टू सी कि अच्छा है, अगर मेरे को ये वर्कर हायर करना है तो आई हैव टू पे वट एवर ही और शी डिमांड्स. At the same time, in the market, you will also find take it or leave it kind of jobs, which will say कि भाई firm ने बता दिया कि इतना मेरे को I'll pay this much, and if you want to join, you join, otherwise go to hell. Again, allowing for this entire spectrum. Okay, so in the macro sense, हम वो simplistic assumptions ले ही नहीं रहे हैं. हम कह रहे हैं कि दोनों मार्केट में बार्गेनिंग भी एग्जिस्ट करती है, बार्गेनिंग पावर वेरी भी करती है, और इम्परफेक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं. अगर तुम्हारा वेज कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए सेट है तो वो एक इम्परफेक्शन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्योंकि तुम्हारा वेज क्विकली एडजस्ट नहीं कर रहा है, तुम्हारा नॉमिनल वेज फिक्स है व्हाइल प्राइसेस आर चेंजिंग, राइट. सो योर वेजेस आर नॉट क्विकली एडजस्टिंग. अगर प्राइस बढ़ा है तो वेज वहीं पे रह गया, तुम्हारा रियल वेज गिर गया है, रादर देन व्हाट दे सेड वाज कि प्राइस बढ़ा तो नॉमिनल वेज ही बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली रियल वेज सेम रह जाएगा.
Okay, so there is some degree of rigidity, there is some degree of imperfection, there is some market power involved in both the markets, goods market भी, labor market. Cool? Okay. So then what we are saying is कि भाई कुछ imperfection है, firms के पास कुछ monopoly power है. So usually what we observe is that firms set a price which is above the marginal cost. So ये marginal cost था और ये है markup. Markup above the MC, right? And what you have is M greater than 0. So overall you will see कि जो भी going wage rate है इकोनॉमी में प्राइसेस उससे ऊपर सेट होती हैं क्योंकि फर्म्स के पास अक्सर मार्केट पावर होती है. ओके, नाउ अगेन डिस्क्लेमर. This, even though it is called the price setting equation या price determination, this is again not a behavioral assumption. ये एक मतलब या behavioral equation नहीं है ये. Okay, this is an economy wide equation which says कि अगर इकोनॉमी में some, like suppose there is a given degree of market power, right, which is reflected in this markup, right? This is the price implied by that market power. So जब ये देखो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है. जो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंडेंट बार्गेनिंग वाला मॉडलिंग था वो था हमारा वेज डिटर्मिनेशन. उसमें फर्म्स वर एक्टिवली इन्वॉल्व एट द माइक्रो लेवल. राइट, देयर वी सॉ दैट बिहेवियरल एस्पेक्ट जहाँ पे फर्म्स बार्गेन कर रहे हैं, एफिशिएंसी वेजेस देने के लिए तैयार हैं, लेबर इज बार्गेनिंग, demanding efficiency wages, and then we reach an equilibrium in the labor market. That is how the wage is determined. Here we are saying that अगर इकोनॉमी में इतनी मार्केट पावर है, अगर इतना फार अवे हो तुम फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, then the price implied, right, और the price that this overall price जो इस इकोनॉमी में सस्टेन होगा वो कुछ ऐसा है. right? तो एक तुम्हें वेज रेट है और एक डिग्री ऑफ imperfection है मार्केट में in terms of imperfect competition. You will see that prices vary directly with the higher the concentration of the market. जितना market concentration higher होगा, you will see in the economy that overall price level is this much higher than the wage level. Okay, ये आया है एक मतलब इंडिविजुअल जो है फर्म के बिहेवियर से, बट दिस इक्वेशन इज नॉट सेइंग कि फर्म ऐसे प्राइस सेट करता है. माइक्रो में हमने किया था ये, लेकिन हम अभी ये नहीं कह रहे हैं. ऑलराइट, इट विल बिकम क्लियरर व्हेन वी डू जस्ट रिमूव दिस, हम बाद में लिखेंगे इसको, अभी जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम करेंगे तो. तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम. And what is known as the natural rate of unemployment. ओके, अभी देखो हमने तो पहले ही ये कहा है ना कि जो वेज डिटर्मिनेशन है वो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बार्गेनिंग और एफिशिएंसी वेज देने की विलिंगनेस और डिमांड करने की उससे डिसाइड होता है. मार्केट कंडीशन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख के डिसाइड होता है. तो सोचने वाली बात है कि ये जो वेज डिसाइड हो रहा है ये अल्टीमेटली तो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम पे ही ना रुकेगा. wage determination is basically going to come where the labor market is in equilibrium. अगर वो नहीं है तो सपोज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है तो वेज कम हो जाएगा. अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो वर्कर्स और वेज डिमांड करेंगे और वेज विल बी पुश्ड अप. The labor market equilibrium in a particular period is given by the wage determination equation because it is capturing behavior of both sides.
तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये इक्विलिब्रियम वो है, वो जो हमने माइक्रो में या फिर बाद में हमने उसमें भी किया. We did it in another thing, right? So we did it in micro, where we are talking about monopolistic competition, right? And मेरे को एक और चीज याद आ रही है जो हमने recently भी किया था. But anyways, the equilibrium that we are talking about right now is the equilibrium where your expectations match the reality. ठीक, तो इसको समझते हैं. So what do we mean over here? पहली बात तो हम जनरली जब इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं, जैसे कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है तो उसमें हम ऐसा सोचते हैं कि डिमांड सप्लाई जहाँ पे इक्वेट हो जाए. लेकिन डिमांड सप्लाई तो हमने उस कर्व की बात ही नहीं की, हमने लेबर सप्लाई के बारे में कुछ कहा ही नहीं, है ना. हमने लेबर डिमांड के बारे में भी कुछ नहीं कहा, राइट. जब प्रोडक्शन फंक्शन की बात की भी, है ना, तभी भी वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि मार्कअप के ऊपर कैसे होगा. हमने कोई लेबर डिमांड जो कि एमपीएन वाला होता है उसके बारे में तो कोई बात नहीं की. यहाँ पे तो एमपीएन इज कांस्टेंट, लेबर डिमांड क्या ऐसा कांस्टेंट रहेगा? नहीं, हमने वो नहीं कहा है. व्हाट वी आर गोइंग टू से इज दैट लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डू दी अलजेब्रा और उसके बाद हम करते हैं, ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट टैकल दी अलजेब्रा एंड देन दी इंट्यूशन. So what we have is, first of all, is that we have the wage setting relation. This is what we had. And उसके पहले लिख लेते हैं, ठीक है. So this is an important assumption that we will make for this part. For now, we will assume that P is equal to PE. That your actual price level is equal to the expected price level. जो प्राइस लेवल तुमने एक्सपेक्ट किया था फ्यूचर के बारे में, राइट, वो ही प्राइस लेवल अभी लैंड हो चुका है. सो सपोज यू एक्सपेक्टेड दैट प्राइस विल गो अप और इन्फ्लेशन इतना रहेगा, 5% रहेगा, 4% रहेगा, या फिर तुमने कहा था कि जो सीपीआई है दैट विल टेक अ वैल्यू ऑफ से 121, राइट, और 120 और सपोज 125, जो भी मोटा मोटा तुम्हारा एक्चुअल प्राइस लेवल जो है is actually matched whatever was your expectation, right? This is an important assumption. I'll come back to it later. So now the weight setting relation becomes what? W P हो गया PE and U comma Z, right? Or what we can do is that we can talk in terms of the real wage. पहले हम PE को डिनोमिनेटर में नहीं ले रहे थे क्योंकि वो एक्सपेक्टेड प्राइस है. W by PE कोई रियल वेज नहीं है ना. Wage by expected price level is not the definition of real wage. But now that we are saying कि PE actually actual price level equal हो गया, so now we can write it like this, which is equal to F UZ, right? And since we are taking Z as exogenous, so we can also write it as Z bar. Alright, ये exogenous है, ये endogenous है, और ये फंक्शनल फॉर्म है जिसका ओनली कॉन्स्ट्रेंट इज दैट दिस पार्शियल डिफरेंशियल इज नेगेटिव, जो हमने कल सैटरडे को किया था. ओके, एंड दिस ऑफ कोर्स इज द रियल वेज. Now the second one is the price setting.
प्राइस सेटिंग रिलेशन क्या है? This is what we had, that your P is equal to 1 plus M times W. You can write it as P by W is equal to 1 plus M, and you can invert it to write that the W by P is equal to 1 upon 1 plus M. Now to know things that you need to notice about it. लिख लिया? Let me know when you written. Things that you need to notice about it again is that this is not a behavioral equation. This is the real wage implied by a markup or an economy level measure of market power. ठीक है, सो लिख लो. डन? हाँ आदित्य? ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जैसे सपोज मार्केट पावर बढ़ती है, राइट? सो सपोज M increases, राइट? सो M increases. हाँ मैं बताती हूँ. Suppose M increases, so what will happen is that the price will increase, right? And अच्छा ऐसे सोच के देखो कि पहले हम एक सिंगल फॉर्म से शुरू करते हैं. सपोज फॉर सम रीजन दिस फॉर्म का मार्केट पावर बढ़ गया है ना, मान लो कंप्यूटर का दुकान बंद हो गई और इसका अपना मार्केट पावर बढ़ गया. तो इसके रिस्पॉन्स में इसने क्या किया, इसने अपना प्राइस बढ़ा दिया, राइट? सो नाउ दैट इट कैन चार्ज हायर प्राइसेस, इट डिसाइडेड टू चार्ज अ हायर प्राइस, राइट? whereas at the same time जो इसके वो थे, क्या नाम है, एम्प्लॉइज थे, उनका तो नॉमिनल वेज फिक्स है. जितने भी टाइम के लिए नॉमिनल वेज कोई लेवल पे फिक्स था. तो जब ये नॉमिनल वेज फिक्स था तो उनका वेज उतना ही रहा. बट द थिंग इज दैट क्योंकि यू नो इन एम्प्लॉइज के कंजम्पशन बास्केट में इस पर्टिकुलर फर्म का प्रोडक्ट तो एक बहुत ही छोटा कंपोनेंट होगा ना. मान लो कि अगर लैपटॉप बेच रही थी या ये फर्म कुछ और ऐसा सामान बेच रही थी, there was an increase in its market power, it increased the prices, but employee का wage rate, एम्प्लॉइज का वेज रेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन उनको इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बाकी इकोनॉमी में प्राइसेस वैसे ही थे, है ना. तो ऐसा नहीं है कि भाई सब्जी के प्राइस बढ़ गए और खाने पीने का सामान का प्राइस बढ़ गया एंड एवरीथिंग दैट यू नीड इन योर डेली लाइव्स स्टार्टिंग फ्रॉम फूड टिल एंटरटेनमेंट सबका प्राइस बढ़ गया, ऐसा नहीं था. एक छोटा कॉम्पोनेंट था, उससे थोड़ा फर्क पड़ा, बट रियल वेज उतना ही रहा.
लेकिन अगर अब ये एक इकोनॉमी वाइड फिनोमिना हो जाता है इन विच समहाउ the markup that firms can charge increases, right? Which means this can be due to any reason, right? It can be due to concentration of power. Suppose there is a lot of merger that is happening, और जो छोटे फर्म्स हैं वो मार्केट से पुश आउट होते हैं, तो इस केस में जो भी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो अपना प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। तो अब जब सब फर्म्स ऐसा करेंगे या अ majority of when a majority of firms do that, then the prices also go up and your क्या बोलेंगे नॉमिनल वेज एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स है, ठीक, तो तुम्हारा रियल वेज कम हो जाता है ना, वहां से ये चीज आती है। सो व्हाट यू ऑब्जर्व इज दैट बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट टर्म इनफ्लेक्सिबिलिटी, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में जो हम बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे जिस तरीके से वेजेस कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं दे हैव सम डिग्री ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसीलिए जब concentration of power बढ़ेगा, concentration of market power बढ़ेगा, तब you will observe that because prices will go up all across the board, your consumption basket will become costlier, right? क्योंकि सिर्फ तुम्हारे फर्म ने प्राइस नहीं बढ़ाया है, हर कोई फर्म प्राइस बढ़ा रहा है, इकोनॉमी में प्राइसेस ऊपर जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा फर्म्स के पास मार्केट पावर होता है वो उतना मार्कअप चार्ज कर लेती हैं, ठीक, so then your real wage is going to go down, and that is what this equation is capturing, right? So your suppose M goes up, P goes up, and this is the price level, okay? So this is not the price of a particular firm, price level goes up, right? Implies that consumption basket becomes costlier, and this basically implies that अगर उतना ही वेज है, वेज अगर इंडेक्स नहीं हुआ है तो रियल वेज नीचे चला गया, ओके, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम ऑफ कोर्स। सो मतलब मीडियम टर्म में हम कह रहे हैं कि वेजेस ऐसे डिटरमिन हो रहे हैं, कुछ और चीजें चेंज हो गई, मान लो कि ऑफ कोर्स अगर ऐसा हो कि सपोज मार्केट पावर बढ़ रही है बट उसके साथ साथ सपोज एम्प्लॉय प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, राइट? सो देन वी विल सी मूवमेंट इन वेजेस ऑल्सो, राइट? देन वी विल सी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो ऐसे भी वेज डिटर्मिनेशन का जो इक्वेशन है उसमें वेज नॉमिनल वेज भी ऊपर जाने लग जाएगी, है ना? तो अभी जब हम एक इक्वेशन पे देखते हैं तो हमेशा उस इक्वेशन में कुछ एक्सोजेनस वेरिएबल्स होते हैं, ये क्या बोलते हैं, जो भी z वेरिएबल है वो अभी यहाँ पर एक्सोजेनस है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक, जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो चेंज नहीं हो रहा है। देन फॉर एवरी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल यू विल सी दैट जैसे जैसे मार्केट पावर ऊपर नीचे होगी वैसे वैसे रियल वेज नीचे ऊपर होता जाएगा। This is what is implied. Now, what I mean that it is not a behavioral equation. It is not saying कि uh, let me put it this way. When we say that wage setting is a behavioral equation, we are saying कि employees और employers interact ऐसे करते हैं आपस में और उसके बाद ये set होता है. So we are capturing their behavior. This is also, you can say, of course, derived from the behavior of firms. कि फर्म्स जो हैं वो अगर ज्यादा मार्केट पावर है तो प्राइस ऊपर सेट करते हैं, दिस इज डिराइव फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ फर्म्स, बट सोचने तो मेरे को सही शब्द क्या है इसके लिए। सो ऑलराइट, द बेस्ट वे टू पुट इट इज दैट it is derived from the behavior of firms, but it is not derived from the behavior of firms in the labor market, right? ये एक इकोनॉमी वाइड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। एक सिंगल फर्म के बिहेवियर से ये डिसाइड होता है कि वो फर्म अपने मार्कअप पे अपने मार्केट पावर के हिसाब से कितना मार्कअप लगाती है, ठीक है, लेकिन उससे ये डिसाइड नहीं होता है कि इकोनॉमी वाइड रियल वेज क्या चलने वाली है।
और ये एक इकोनॉमी वाइड इक्वेशन है. दिस इज सेइंग कि अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मार्केट पावर है इकोनॉमी में, तो रियल वेज उसके उल्टे डायरेक्शन में चलेगी. Alright, this is not something that is happening, solely in the labor market. This is an adjustment process happening in the medium run. Alright, okay. So now equilibrium का क्या मतलब है? पहले तो हम yeah. So equilibrium then will mean what? Equilibrium will imply that wherever the real wage that is reached in the labor market is equal to the real wage that is implied by the overall market power. ये लिख लो फिर मैं समझाती हूँ, right? So equilibrium implies that equilibrium is which is reached by wage setting. And this wage setting involves both sides of the market. Of the labor market. है ना? The real wage which is reached by wage setting is equal to the real wage implied by price setting. Graphically, the graph, the endogenous variables, two endogenous variables that we have over here, जो इस मार्केट में डिटरमिन होते हैं, वो है तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वो है तुम्हारा रियल वेज. ठीक है. नाउ हाउ डज रियल वेज डिपेंड ऑन अनएम्प्लॉयमेंट? नेगेटिवली. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो वेज सेटिंग है, राइट? सो वेज सेटिंग इक्वेशन जो है वो कैसे प्लॉट होती है? वेज सेटिंग shows that real wage is an inverse or is inversely related to the level of unemployment, right? So we will have something like this. कोई फंक्शनल फॉर्म हमने अज्यूम शुक्र है, कोई फंक्शनल फॉर्म हमने अज्यूम नहीं किया है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है. दिस इज द वेज सेटिंग, WS, which is W by P is equal to some function of U comma Z bar, and all we know that ये negatively inversely related है. प्राइस सेटिंग का इक्वेशन कैसा है? ऐसा. इसमें यू है कहीं भी? अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे ये डिपेंडेंट ही नहीं है. फॉर एनी गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइट, यू विल हैव W by P equal to 1/1 plus M. Price setting, and this is 1/1 plus M.
कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, एक गिवन लेवल ऑफ market power or a given level of markup that the firms can charge in the economy overall implies a certain real wage, right? This is what this is saying. Now, wherever they match एक ऐसा real wage, ठीक है, जो wage setting वाले जो भी you have reached the wage, the real wage that you have reached via this equation, right, equates that real wage to the real wage that is implied by the economy-wide market power. This is called the equilibrium unemployment rate, which is the natural rate of unemployment. ठीक है, बिफोर आई एक्सप्लेन इसका मीनिंग क्या है, इस इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ भी नेचुरल नहीं है. सो आई हैड दिस, शी इज नॉट एक्चुअली अ स्टूडेंट ऑफ माइन बट आई मीन शी has a master's in economics, right? But this is such a common confusion. So she said कि unemployment मतलब how can the natural rate of unemployment change? Because there is nothing natural about it. It is talking about a certain kind of equilibrium. उसको natural क्यों बोलता है, वो एक misnomer है. But इसमें कुछ भी ऐसा natural नहीं. तुम M बदल दो, you change the market power, market concentration in the economy, you will see a different. तुम अगर wage setting equation shift कर दो, we'll do both these things. तुम अगर wage setting equation shift कर दोगे, right, which is shift कहाँ से आएगा? Exogenous variable के change होने से shift आएगा, which is any change in Z bar. तो जब Z बार में कोई चेंज आएगा, तुम्हारा वेज सेटिंग इक्वेशन कर्व शिफ्ट हो जाएगा, या तो राइट या तो लेफ्ट, फिर से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो इसको नेचुरल क्यों बोलते हैं? ब्लैंचर्ड आल्सो आर्ग्यूज के यू शुड कॉल इट रादर अ स्ट्रक्चरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि नेचुरल समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट गिव्स यू द इंप्रेशन के दिस इज वेरी फंडामेंटल, right? This doesn't change. It's natural. It's something that the economy reverts to, but there's nothing natural about it. It just doesn't depend on W by P and U, जो हमारे endogenous variables हैं, वो बात ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा natural नहीं है. So he says that a better term would be to call it structural unemployment, right? Which depends on the structure of the economy. Structure कहाँ से आता है कि economy में कितना degree of market concentration है. Structure कहाँ से आता है? economy में ये Z bar के क्या values हैं, right? So minimum wage laws क्या हैं, employee protection laws क्या हैं, unemployment benefits के क्या rules हैं. So these are the structural policy aspects of the economy, right? Structural aspects of the economy that determines the natural rate. So you should basically call it structural rate of unemployment, because that tells you कि change करने के लिए economy के structure में change होना चाहिए. A natural rate of unemployment kind of tells you कि मतलब it's so fundamental कि अब कुदरती इसे बदल सकती है, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, so let's take a 5-minute break over here, right? I'll come back and I will explain to you कि इस equilibrium का मतलब क्या है, जिसको समझना बहुत जरूरी है. All right? चलो, take a 5-minute break. ऐसे algebra and graph तो बहुत ही clear है, उसमें कुछ खास है ही नहीं, है ना? algebra और graph तो बिल्कुल ही simplistic है, बट इसका मतलब समझना जरूरी है कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये equilibrium है, जबकि हमने wage setting से तो already equilibrium labor market का define कर दिया ना. तो ये additional क्या है? ठीक? Okay, we see meet at 12:20. Yeah, I know. So which topic did you choose? ऐसा टॉपिक चूज किया जिससे बोरियत होगी, टैक्सेशन? Yeah, I would be bored.
ओके, ठीक है, बताना मेरे को हाउ इट इज टर्निंग अप एंड व्हाट इज द फाइनल क्वेश्चन दैट यू डिसाइडेड. फिलहाल तो यू हैव टू डू द लिट रिव्यू. Okay, so now let us understand that what does this equilibrium mean, right? So this is very important, where what I'm going to explain right now. Meaning of this equilibrium. All right. This is not the equilibrium, right? This equilibrium is not about labor demand equal to labor supply in the labor market. Okay, because that will always be the case जब भी wage setting equation पे के according काम होगा. That is what your wage setting is doing, as I said. This is where, so equilibrium here is when expectations match reality. Okay, when P is equal to PE. ओके, और ये हमने आर्टिफिशियली ही अभी अज्यूम कर लिया था फॉर सिंप्लिसिटी. व्हाट दिस इज सेइंग इज कि किसी भी टाइम पीरियड में, है ना, इन बाय द इंटरैक्शन इन द लेबर मार्केट, राइट, वेज डिटर्मिनेशन से, और इंटरैक्शन इन द लेबर मार्केट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और कितना डिमांड है उस जॉब का, क्या स्किल रिक्वायरमेंट है, क्या बार्गेनिंग पावर है, ये सब कर कुरा के लेबर मार्केट में जो वेज डिटर्मिनेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेज सेट होगी, वो लेबर मार्केट डिमांड इक्वल टू लेबर मार्केट सप्लाई कर देगी. ठीक है, लेकिन एट एनी टाइम द रियल वेज दैट इज इम्प्लाइड बाय दिस may not be equal to the real wage that is implied by the overall market concentration in the economy. ये तभी होगा जब जो प्राइस एक्सपेक्टेशन से सेट हुए थे ये हमारे वेजेस, है ना, W वेज सेटिंग में W इज इक्वल टू PE टाइम्स F फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये तभी होगा जब जो प्राइस लेवल्स एक्सपेक्ट किए गए थे वो ही प्राइस लेवल्स एक्चुअल में हों. अगर ऐसा नहीं होगा, सो यू विल लुक एट दिस ग्राफ. सपोज दिस इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना. अभी अगर मान लो कि, और इस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे वेज जो है वो 1/1+m होनी चाहिए, राइट, वट एवर इज इम्प्लाइड बाय द प्राइस सेटिंग इक्वेशन. अगर मान लो कि तुम कहीं यहां पर हो, W/P1 and this is U1, मतलब you are at an unemployment rate that is higher than the natural rate of unemployment. ठीक है, वो उस रेट से हायर है, सॉरी लोअर है, राइट, सॉरी. So you are at an unemployment rate that is lower than the unemployment rate which is natural, which is implied by the structural factors. इसका मतलब जो हमारा रियल वेज है वो इस रियल वेज से हायर है ना. तो इसका मतलब ये है कि या तो प्राइस लेवल्स जो हैं वो कम है एक्सपेक्टेड से. दिस मींस दैट बेसिकली दैट योर W/P1 is greater than W/P which is N, the natural rate, है ना. इसका एक इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि यहाँ पे जो प्राइस लेवल है ये वाला, ये लोअर है, तभी ना ये वाला जो रेशियो है वो हायर होगा. सो P, sorry, P1 is lower than Pn. The price that prevails in the economy, है ना, is less than the price that given की market, मतलब तुम्हारी इकोनॉमी में इतना concentration of power है,
इसका मतलब कि फर्म्स इससे मतलब इससे हायर प्राइस इकोनॉमी सस्टेन करेगा। फर्म्स के पास इतना पावर है, अल्टीमेटली प्राइस वहां तक पहुंचेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट यू आर ऑब्जर्विंग कि जो वेजेस हैं, राइट, दे आर टू हाई, बट तुम्हारे पास मार्केट पावर बहुत ज्यादा है, तो दोनों साइड ऑफ द मार्केट विल स्टार्ट एडजस्टिंग। कैसे? जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम है, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी at this low unemployment rate, right, you will have an inflationary pressure, ठीक है। सो कुछ दोनों साइड्स ऑफ द मार्केट एडजस्ट करके तुम यू विल मूव अलोंग दिस कर्व, राइट, योर प्राइसेस विल स्टार्ट राइजिंग, राइट। तुम्हारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है तो प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, प्राइसेस, हाँ, राइट, सो योर प्राइसेस आर लोअर देन व्हाट दे शुड बी, बट अनएम्प्लॉयमेंट इतना कम है तो अब वेजेस पे प्रेशर पड़ने लगेगा। सो ऐसे सोच के देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है इकोनॉमी में, है ना, तो तुम्हारा टेंडेंसी क्या रहेगा, एम्प्लॉयज के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, है ना, तो वो क्या पुश करने लग जाएंगे, अपने नॉमिनल वेजेस। जब वो नॉमिनल वेजेस पुश करेंगे तो फर्म्स अपना प्राइस भी तो ऊपर बढ़ाएंगी ना, they will start pushing up the prices and they can do that because they have that market power। इस इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें इतना मार्केट कॉन्सेंट्रेशन है फर्म्स के, तो वो अपना मार्केट प्राइस बढ़ाने लग जाती हैं। और जब मार्केट प्राइस बढ़ाएंगी तो अल्टीमेटली गिवन द रिजिडिटी इन द वेज स्ट्रक्चर, real wages are going to come down and you're going to move along the wage setting equation to the point where the unemployment is higher, equal to the natural level of unemployment, and the wages, real wages are lower. So at any given point of time, your labor market may be in equilibrium, but your economy will not be in equilibrium. क्योंकि इकोनॉमी किस चीज के इक्विलिब्रियम से आती है, लेबर मार्केट प्लस प्रोडक्ट मार्केट, सारे मार्केट्स के इक्विलिब्रियम से। और यहाँ पे ये चीज इंप्लाई होती है कि तुम्हारे जो भी एक्सपेक्टेशंस थे, अगर वो रियलिटी से मैच नहीं होते हैं तो तुम इक्विलिब्रियम में नहीं रहोगे, राइट। सो हियर व्हाट हैपेंड दैट योर प्राइस, you expected you can say a price level that was lower, sorry, the actual price level turned out to be lower than what was expected, है ना। तो उस केस में लोगों को दिखा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इतना कम है, प्राइस लेवल कम है, तो हमको क्या करना चाहिए कि और यू कैन एक्चुअली से दैट no, not exactly. So what we have is that over here, when people observe that the real wages are higher, right, unemployment is lower, तो फिर नॉमिनल वेजेस के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाएगा। और जब नॉमिनल वेजेस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो फर्म्स, बिकॉज दे हैव दैट मार्केट पावर बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, दे स्टार्ट पुशिंग द प्राइसेस आल्सो हायर। सो देन अब ये जो नॉमिनल वेजेस फिक्स हो जाएंगे, इसके बाद ये क्या करेंगे, ये नॉमिनल वेजेस फिक्स हो गए, प्राइसेस बढ़ने लग गए, तो रियल वेजेस कम होने लग गए। सो इट इज एन एडजस्टमेंट दैट हैपेंस ओवर द मीडियम रन इन सेवरल आइटरेशंस। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन अगर रियलिटी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हो रही है तो फिर या तो प्राइसेस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर रहेगा या फिर वेजेस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर रहेगा। ऑफ कोर्स साथ में दोनों चीजें चलेंगी एंड यू विल अगेन कम बैक टू द अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट इज एट द नेचुरल लेवल, वो स्ट्रक्चरल। दिस इज व्हाट इट मीन्स। सो हियर वी स्पेसिफिकली हमने ऊपर से पहले ही अजम्पशन लगा दिया था दैट P इज इक्वल टू PE, है ना। Of course, this will not be true. Only when this is true, you will be able to find that जो actual labor market में wage setting से आया है चीज, वो ही you will get from the price setting. If P is not equal to PE, you can be anywhere along the wage setting curve, but only when P is equal to PE, you will be at the intersection point. ठीक है? So if P is not equal to expectation, labor market equilibrium can be anywhere on the wage setting curve या wage setting schedule. Only when reality matches expectation
labor market equilibrium will be on the intersection point. ओके तो जो हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे अभी तक केनेशियन मॉडल में, वो शॉर्ट रन था बेसिकली, जहां पे द ओनली थिंग वाज हैपनिंग वाज कि वेजेस अपना गिवन थे, वहां पे एडजस्टमेंट वैसा नहीं हो रहा था, और वट एवर वॉज हैपनिंग द नॉमिनल वेजेस वर फिक्स्ड। ठीक है, तो उस केस में जब नॉमिनल वेजेस अभी में भी रिजिडिटी है, रियल वेजेस में भी प्राइस इज रिजिड, राइट, देन यू ऑब्जर्व के जो भी मतलब यू कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द गुड्स मार्केट, एंड योर आउटपुट कैन बी एनीवेयर, जरूरी नहीं है कि वो भी वाई एन पे हो, है ना। इस UN के कॉरेस्पॉन्डिंग एक YN भी आएगा, जो अब नेक्स्ट क्लास में हम ASAD मॉडल में करेंगे। एक नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज a natural level of output. Huh? So your short run equilibrium can be anywhere where your AD is equal to your Y, जो कीन्शियन वाला मॉडल था, लेकिन मीडियम रन जो इक्विलिब्रियम है वो तभी होगा जब Y implied by this is equal to the natural level of output, which is basically implied by this unemployment level. ठीक है, सो अब मीडियम रन में हम अलाउ कर रहे हैं प्राइसेस को भी मूव करने के लिए, और जब प्राइसेस मूव करते हैं तब हमें ऐसा दिखता है कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में मिसमैच हो सकता है। इट इज नॉट वेरी क्लियर राइट नाउ, आई नो दैट, क्योंकि अभी हमने एक्सपेक्टेशंस के बारे में अच्छे से बात ही नहीं की है। यहाँ पे हमने आर्टिफिशियली इम्पोज कर दिया कि P इज इक्वल टू PE, राइट, बट देन यू हैव टू मतलब दिस इज अ टीजर के व्हाट टू एक्सपेक्ट। वी आर सेइंग दैट इक्विलिब्रियम तब होगा मीडियम रन में जब सिस्टम में और कोई खींचातानी नहीं होगी, वो तब होगा जब जो लोग प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही एक्चुअल प्राइस स्ट्रक्चरल फैक्टर्स से इम्प्लाई हो। अगर वैसा नहीं होगा देन देयर विल बी अगेन पुश एंड पुल इन द प्राइस, बिकॉज इन द मीडियम रन प्राइसेस कैन एडजस्ट। ठीक है, सो प्राइसेस पुश एंड पुल होगा इन विच एवर इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शन, एंड देन यू विल सी अ मूवमेंट टूवर्ड्स द natural unemployment level and the wage implied by that market power. ठीक है, this is what we mean by equilibrium over here. algebra हमने कर लिया है, we did this right. सॉरी, इसका हमने इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है ना, सो इक्विलिब्रियम would mean के इन दोनों का कर्व का intersection, which is basically that W by P according to price setting is equal to 1/1 plus M, and according to wage setting is this. So this will occur when this holds, है ना। मैंने यहाँ पे UN लिख दिया है because this is the level of unemployment at which this will hold. है ना, जिस भी लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे ये इक्वेशन होल्ड करेगी उसको ही वी विल कॉल द नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment level which satisfies the equilibrium condition. ठीक है, सो वन क्वेश्चन दैट यू मे थिंक, अभी तक हम अगर ये नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि एक इम्प्लाइड नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट भी आएगा, तो फिर हम अभी तक क्या बात कर रहे थे, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आउटपुट को अफेक्ट कर सके। हम एग्जैक्टली ये शॉर्ट रन और मीडियम रन के डिफरेंस की बात कर रहे थे। शॉर्ट रन में द इक्विलिब्रियम इज नॉट कंसर्न अबाउट the structure of the structural employment, unemployment and output that is implied by the structural
built of the economy. शॉर्ट रन में जहां पर भी है वहीं पे इक्विलिब्रियम की बात करनी है. तो अगर हमको आउटपुट को बढ़ाना है तो ऑफ कोर्स इफ यू हैव टू मूव इट टुवर्ड्स द नेचुरल लेवल, टुवर्ड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, या फॉर व्हाटएवर रीजन ब्रिंग इट आउट ऑफ द रिसेशन, यू विल हैव, तो तब मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी ही काम आती है. लेकिन हाँ, मीडियम रन में जो है अल्टीमेटली एडजस्टमेंट होते 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 यू विल रीच अ पॉइंट वेयर यू आर एट द नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. तो इसका ही एनालिसिस जो है अभी एडीएएस में करेंगे. अभी के लिए दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शॉर्ट रन और मीडियम टर्म रन में फर्क यही है. प्राइसेस एडजस्ट होंगे तो तुम चल पड़ोगे उस तरफ, नेचुरल की तरफ, स्ट्रक्चरल की तरफ. प्राइसेस एडजस्ट नहीं होंगे शॉर्ट रन में तो तुम्हारे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी बहुत काम आएंगे. ठीक है. ओके. So now let us do a couple of changes in क्या बोलते हैं exogenous factors and see how that affects. Right? This is the last thing. So effects of changes in exogenous factors. है ना, which we will show के ये जो exogenous factors हैं यही वो structural factors हैं, इनमें change होगा तो natural rate अपने आप change हो जाएगा. So there is nothing natural about it. The first thing that we will consider is a change in Z. Z जो है वो हमेशा ऐसा होगा जो कि you have to structure it in a way that relates it positively to real wage. ठीक है. सो अगर unemployment benefits है तो increase in G would mean that increase in unemployment benefits. इसको ऐसे नहीं phrase करना है कि unemployment benefits हटा दिए या फिर employee protection weaker हो गया. नहीं, stronger हुआ. राइट. सो इट हैज ऑल, क्योंकि हमने वो पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, फंक्शन ही वैसे डिजाइन किया है. सो ऑलवेज एन इंक्रीज इन जी वुड मीन समथिंग दैट वर्क्स इन फेवर ऑफ वेजेस. तो ये बात याद रखना. सो इफ योर जी इंक्रीजेस, राइट, दिस implies that increase in real wage for every unemployment level. है ना, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो. अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हायर मिलने लग जाते हैं तो नो मैटर मार्केट में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही हो, तुम्हारी रिजर्वेशन रेट बढ़ जाएगी, तुम्हारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी. है ना, तो तुम बिल्कुल ही लो वेजेस एक्सेप्ट नहीं करोगे. यू विल, योर रियल वेज विल गो अप, योर डिमांड विल गो अप, एंड देन द एम्प्लॉयर हैज टू आल्सो प्रोवाइड यू दैट रियल वेज. So this means that right shift of the wage setting equation. ये WS जो है वो ऐसा शिफ्ट हो जाएगा WS2. ठीक है. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज ये UN था और अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाती है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. There was a change in the structural factor. There's a change in the reservation wages of workers. But what you will observe is W by P does not change. So UN increases and W by P is the same. तो यहाँ पे हुआ क्या पता है, लिख लो लिख लो लिख लो. Am I going too fast? It's fine. Am I going too slow?
पक्का? आई कैन गो फास्टर। बता देना अगर स्लो भी लगे, हो सकता है समझ में आ रहा हो, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेट मी नो। इट्स फाइन। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, सरकार ने बढ़ाया, ठीक है, सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ा दिए मान लो, वर्कर्स को लगा कि भाई अनएम्प्लॉयड रहना इतना भी बुरा ऑप्शन नहीं है, सो आई कैन होल्ड ऑन टिल आई गेट बेटर वेजेस, राइट? सो देयर बार्गेनिंग पावर इंक्रीज्ड। फर्म्स का बार्गेनिंग पावर कम हो गया, क्योंकि अगर ये नहीं लेगा तो दूसरा उस रेट पे अब कोई भी नहीं लेने वाला है, इस वेज रेट पे देयर इज नो वर्कर हु इज टेकिंग इट, राइट? और मच फ्यूअर वर्कर्स हु आर विलिंग टू टेक इट, देयर बार्गेनिंग पावर वेंट डाउन, राइट? सो देन द वेज एसेंशियली वेंट अप, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल वो है, जब वेज इंक्रीज हुआ, नॉमिनल वेज, है ना, तो नॉमिनल वेज इंक्रीज होने से क्या हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया इनका। अब क्योंकि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पे जहां पे द मार्केट पावर विद द फर्म्स इज गिवन बाय दिस एम, और ये एम तो चेंज नहीं हुआ ना। लेबर मार्केट में इनका बार्गेनिंग पावर थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में तो है, प्रोडक्ट मार्केट में तो है बार्गेनिंग पावर। तो जब यहाँ पे इनका प्राइस इंक्रीज हुआ तो इन्होंने कस्टमर्स को पास ऑन कर दिया। और ये कस्टमर्स कौन है? ये कस्टमर्स यही लोग हैं ना जो नौकरी कर रहे हैं। तो जब ये इंक्रीज हुआ तो रियल वेज इंक्रीज हो गया, सॉरी रियल वेज डिक्रीज हो गया, राइट? सो वो जो इंक्रीज था वो बैलेंस आउट हो गया, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड वाज कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया, right? The natural level of unemployment increased, and because of this increase in the natural level, the workers also have to adjust, or workers also have to accept a lower wage rate. तो वो जो बीच में स्पाइक हुआ था, डब्ल्यू का, फिर पी का भी स्पाइक हो गया, फिर वेज रेट उतना ही आ गया, और फिर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और इस अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से वर्कर्स जो हैं दे हैव टू गो विद अ लोअर वेज रेट, लोअर रियल वेज रेट, ठीक है। सो हमेशा ही मैक्रो में जब एडजस्टमेंट देखते हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस टू एंड फ्रो, बिकॉज इट्स नॉट अ लाइक वन साइडेड मूवमेंट, ऑल द थिंग्स आर एडजस्टिंग साइमल्टेनियसली, मल्टीपल, ये कहाँ चली गई, ऑल द थिंग्स आर एडजस्टिंग साइमल्टेनियसली मल्टीपल राउंड्स में, है ना। ये एडजस्ट हुआ तो वो एडजस्ट हुआ, वो एडजस्ट हुआ तो वो एडजस्ट हुआ, हमेशा चीजें एक साथ चलती रहेंगी। So this is how you have to think about it. So you increased wages, wages बढ़ाने से फर्म्स ने अपना प्राइस बढ़ाया, बट फर्म्स ने जब प्राइस बढ़ाया तो फर्म्स ने अपना, सॉरी, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोइंग हायर, मे बी दे ऑल्सो डिसाइडेड टू हायर फ्यूअर वर्कर्स। जब वेज हायर होगा तो तुम अपना एम्प्लॉयमेंट भी घटा दोगे, तो डिमांड भी घट गई, एट द सेम टाइम प्राइस भी इंक्रीज हुआ, है ना। दोनों का फैक्टर का नतीजा क्या हुआ कि प्राइस भी इंक्रीज हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। वांट मी राइट इट, एक थोड़ा साइकिल लिख लें कैसे कैसे एरोज में काम करता है। सो व्हाट वी हैव इज दैट as your say z bar increased, right, नॉमिनल वेज इंक्रीज हुई, क्योंकि वर्कर का बार्गेनिंग पावर बढ़ गया, फर्म्स का कम हो गया। अब ये नॉमिनल वेज इंक्रीज होने से दो चीजें हुई, कुछ तो फर्म्स ने कंज्यूमर्स को पास ऑन किया, क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एम है, हाँ मैं दोबारा ही समझा रही हूँ, ठीक है। सो क्या किया हमने, जब कोई भी सरकार के एक्शन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल यू सॉ एन इंक्रीज इन जेड बार, यू सॉ के बिकॉज ऑफ इंक्रीज बार्गेनिंग पावर, मार्केट क्लियरिंग नॉमिनल वेज रेट इंक्रीज इन द लेबर मार्केट, वर्कर ने ज्यादा डिमांड किया और फर्म्स को देना पड़ा। एक साइकिल ऐसा हुआ मान लो एक पीरियड में। अब इस एक पीरियड में जब ऐसा हुआ तो अब फर्म्स के पास महंगी लेबर आ रही है। फर्म्स का दो रिस्पॉन्स होगा, पहला रिस्पॉन्स होगा कि वो प्राइस पास ऑन कर दे कंज्यूमर्स को, गुड्स मार्केट में उनके पास मार्केट पावर है। दूसरा कि जब वेज रेट बढ़ रही है तो वो एम्प्लॉयमेंट भी तो घटा देंगे ना, दे विल रिड्यूस हायरिंग, राइट? सो दे विल रिड्यूस हायरिंग, ऐसे लिख लो कि, अरे
U falls or U rises, sorry, because firms reduce hiring. अब इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा? जब ये P इंक्रीज हुआ तो जो W बढ़ा था, अब W हर पीरियड में एडजस्ट हो नहीं रहा है, नॉमिनल फिक्स हो गया, हायर लेवल पे हुआ है, लेकिन P भी बढ़ गया तो W/P नीचे को आने लग गया, है ना। और अब अनएम्प्लॉयमेंट फर्म्स बोल रहे हैं कि नहीं, इतने इस दाम पे जो है हम कम लेबर हायर करेंगे, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, फिर से वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर, वर्कर्स वापस से औकात में आ गए, और फिर क्या हुआ? वहां से भी उनको दे हैव टू नाउ एक्सेप्ट लोअर वेजेस, राइट? सो इन द नेक्स्ट पीरियड देन द नॉमिनल वेजेस आल्सो केम डाउन। तो ये जब दोनों तरफ से एडजस्टमेंट हुआ एंड फाइनली यू गॉट टू अ पॉइंट जहां पे ये बेसिकली तुमने यू जस्ट मूव्ड अलोंग दिस कर्व। इसके अंदर बहुत सारा एडजस्टमेंट हुआ, नॉमिनल वेजेस कभी ऊपर गए, फिर प्राइस ऊपर गए, फिर नॉमिनल भी नीचे आया, रियल भी नीचे आया, सब कर पुरा के यू रीच्ड अगेन टू दिस पॉइंट वेयर द ओनली रिजल्ट वाज के नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हायर हो गया, फुल, एंड अल्टीमेटली वर्कर्स को कोई मतलब an average, or you can say that in the economy the real wage did not go up, right? But that doesn't make a case for not having or not increasing unemployment benefits. So this would be something like a redistribution. कुछ लोग जो बहुत ही कम लेवल्स पे एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट कर ले रहे थे, दे विल गेट अ लाइफ सपोर्ट, दे विल गेट मतलब फिर ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के डिस्कशन में हम चले जाते हैं, थोड़ा बहुत इसमें नॉर्मेटिव एस्पेक्ट आने लग जाता है ना। तो अगर तुम सिर्फ ऐसे यू विल ओनली लुक एट इट लाइक कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज ही हो गई नेशनल लेवल पे और रियल वेजेस बढ़े नहीं, लेकिन ये जो हुआ इसमें एक रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ इन विच several a group of people or several groups of people who were forced to work for very low wages, right? They can now decide to be also unemployed, and not accept, say, work at very low wages, क्योंकि सरकार फिर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, and that may be a better situation to be in, right? So that kind of thing. So you see this increase in unemployment. ये वही लोग हैं कि भाई जिनका पहले मान लो कि वो बहुत ही कम वेजेस पे काम कर रहे थे, now they are able to afford being unemployed for some time, some more time. Okay, all right, clear है ये? चलें आगे। Okay, so this is a change in Z. The next is that you have a change in M. Right? M क्या है? It's a measure of your market power. तो suppose किसी रीजन से जो है कम इकोनॉमी में competition laws weak हो जाते हैं, right? For some reason, you know, the CCI becomes dysfunctional and I don't know. So for some reason M starts increasing. ठीक है? So suppose M increases, है ना। तो अब क्या होगा जब M इंक्रीज होगा? पहले तो ग्राफ बना लें। This was your price setting and this is your wage setting. तो जब M इंक्रीज हुआ तो प्राइस सेटिंग क्या करेगा, ऊपर या नीचे? शिफ्ट होगा ना, किधर को शिफ्ट होगा? नीचे। मार्केट पावर और वेज रेट, रियल वेज इनवर्सली रिलेटेड है, जितना मार्केट कॉन्सेंट्रेशन उतना कम रियल वेज, because they will be able to charge a higher price in the goods market, and then when everyone charges a higher price level will go up, nominal wages वैसे नहीं जाएंगे, है ना। So then you will see that the price setting equation shifts down.
Okay, and UN again increases, UN prime, and your W by P also falls. 1 या 2 कर लो वैसे भी। And this is pretty straightforward. Suddenly firms have much higher market power. Labor market situation change nahi hui hai agar. So then the bargaining power and the, with the firms and the employees remains the same. So wages वैसे ही set हो रहे हैं. लेकिन अब मार्केट में, गुड्स मार्केट में फर्म्स के पास ज्यादा मार्केट पावर है. तो जो वेजेस वो दे रहे हैं उससे हायर मार्कअप पे चार्ज कर रहे हैं. पहले 100 के बजाय 100 देते थे, 120 प्राइस करते थे, अब 100 दे रहे हैं, 140 प्राइस कर रहे हैं. और सारे के सारे फर्म्स ऐसा कर रहे हैं. सो व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है, वेजेस वैसे ही 100 पे चल रहे हैं, एंड देन रियल वेजेस हैव फॉलन, राइट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हैज आल्सो रिजन. ठीक है, तो ये देखना कि ये जो मूवमेंट है ये अलोंग द वेज सेटिंग हो रहा है. विच मीन्स कि जब रियल वेज फॉल हो जा रहा है तो larger number of people are choosing to remain unemployed, because the wages that they are getting is not enough. Okay, so so this is your labor market equilibrium. We can stop here for today. अभी फिर हम कल इसको लेकर जाएंगे आउटपुट मार्केट में और ASAD कर्व की बात करेंगे. बट व्हाट यू हैव टू रियलाइज फ्रॉम हियर इज दैट इक्विलिब्रियम का मतलब अब एक्सपेक्टेशंस की बातें भी हैं जो हम एक्सप्लिसिटली लेकर आएंगे. सो एक्सपेक्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वी हैव टू मॉडल दी rigidities in the labor market, in the way wages are set. Wages are set in a contractual manner. हर दिन का प्राइस देख के वेज सेट नहीं होता है. बहुत ही अनरियलिस्टिक मॉडल है. ऐसा कभी वेज सेट नहीं होता है और बहुत ही रेयर केसेस में होता है. एटलीस्ट इकोनॉमी वाइड नहीं होता है. So to do that, we have to work with some kind of expectation about the future, right? And expectations का role anyways investment में भी important है, policy expectations में भी important है. So this will become a main component of our analysis now. So what we've done right now is a simplistic version जहाँ पे हमने ऊपर से बोल दिया कि P is equal to PE. जब P is equal to PE actually में equilibrium requirement है ना. तो जब P is equal to PE होगा, जब हमारे सपने हकीकत से मैच कर जाएंगे, तब हमको वो वेज रेट इक्विलिब्रियम दिलाएगा जहाँ पे बेसिकली ये जो दो एक लेबर मार्केट में चीजें चल रही हैं और एक गुड्स मार्केट से इम्प्लाई हो रहा है. जब ये दो सेपरेट चलती हुई चीजें राहों में इनकी मुलाकात होगी, then you will see that system is in equilibrium in the sense that people are not expecting anything else to happen. Whatever happened, people expected that. And this is exactly जो हमने monopolistic competition में बोला था, है ना. क्यों ये monopolistic competition वाले इकलौते फॉर्म पीछे पड़ रहे थे कि चलो प्राइस और घटाते हैं, प्राइस और घटाते हैं. बिकॉज दे उनका जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व था वो उनका प्लान डिमांड कर्व से अलग था वहां पे, है ना. सो दे वर प्लानिंग कि अगर हम प्राइस इतना गिराएंगे, रिमेम्बर ऐसा कुछ होता था. सो दे वर प्लानिंग कि अगर प्राइस इतना गिराएंगे तो सॉरी इतना यहां से यहां फॉल करेंगे तो मेरा क्वांटिटी इतना बढ़ जाएगा. लेकिन बढ़ता कितना था? इतना. और क्योंकि वो उनको लगता था क्यों ऐसे क्यों हुआ, बेवकूफ थे अलग बात है. बट द थिंग इज दैट they were thinking their expectation was not matching the reality. The only time it matched was when they were at the intersection point. It is the same kind of argument. You will keep on trying to readjust जब तक तुम्हें लगेगा कि नहीं, I expected something else, right? You will keep on updating the expectations also, and then you will stop when you've reached a point where your updation is correct. So you've reached a point where you observe the reality and that is matches what you expected.
This is how he will move with equilibrium now. ठीक, क्लियर है ये? ओके, हाँ आदित्य? ओह थैंक गॉड, आई थॉट फिर से रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है. ओके ओके, सो आई विल स्टॉप हियर नाउ. आई होप आदित्य को क्लियर है. कैन यू हियर मी? कहाँ चला गया? चलो ठीक है. ओके देन आई विल सी यू टुमारो 11:30 यूजुअल टाइम. ठीक है. ओके गाइस.